Last Tuesday, a powerful earthquake rocked Pakistan and Afghanistan, with tremors felt as far afield as India. The quake, which had its epicenter in the Hindu Kush, was measured at 6.5 on the Richter scale, and huge damage was only avoided because the quake occurred at a depth of some 184 kilometers. Nevertheless, over a dozen people have been reported killed in Pakistan and Afghanistan, with most of the fatalities resulting from collapsed walls and roofs. It was a close call in a region where, due to the juncture of the Eurasian and Indian tectonic plates, earthquakes are a regular and deadly feature. Despite this, most residents in Islamabad said that they had no actual idea of the safest ways to evacuate a building during a quake. No one had told them to avoid elevators, and no building administration had ever bothered to conduct an earthquake drill. As with most things, Pakistanis were left to handle the situation as best they could. Pictures and videos soon began to make their way onto social media, with residents showing cracked walls and columns, even in newly constructed buildings. Now, some level of damage is inevitable in such cases, but, given the memories of the 2005 quake, and also the recent devastation in Turkey, questions were once again asked as to how earthquake-resistant our buildings are. The answer is, not at all. Examples abound of how to minimize building damage. But if one were to look at what earthquake-resistant architecture could look like, here are some examples. To start with, the fundamental concept is to build structures that may sway, bend or distort but will not easily collapse. To find a model, one can start by looking at traditional architecture in quake-prone areas, beginning with Kashmir, where the earthquake-resistant Daji Diwari buildings are a subject of focus among architects in India, especially after the 2005 quake, when it was seen that buildings constructed using this technique fared better than more modern buildings. This wasn't the first time the design had proven its worth. In the Srinagar quake of 1885, these buildings were the ones that survived while many others were flattened. The secret is in the name itself. Daji is derived from a Persian word used by carpet weavers to describe a quilt patchwork, while Diwari means wall. Put those together and you have a quilt-like timber patchwork frame used to strengthen and fortify walls that are constructed not from concrete but from local materials which provide stiffness, but not strength, allowing buildings to sway and bend, but lowering the chances of collapse by tying the building together. Similar architecture can be seen in the Indian state of Uttarakhand, where the traditional pharaohs follow a similar building style, with the addition of wooden blocks and long flat stones in the walls to distribute the seismic pressure. The Japanese archipelago, circled as it is by the volcanic ring of fire, has seen countless deadly earthquakes, and its traditional architecture reflects that history. Take the pagodas, which have survived devastating earthquakes over the centuries. The main features of this design are the Shinbashara, a heavy central column that acts as a shock absorber and resembles a human spine in its design, allowing the building to flex and sway slightly. Then there are wide heavy eaves that act as dampers and floating floors that are disconnected from the rest of the building, allowing them to absorb seismic motion without bringing the whole building down. Taken together, these allow the pagodas to absorb most of the seismic energy without affecting the entire structure too badly. Many of these features have been incorporated in modern earthquake-resistant design, especially in Japan, and work on what is called the principle of seismic isolation. This means the building is placed on some sort of a shock absorber, which is sometimes simply thick blocks of rubber, that then absorb the motion of the earthquake. Along with this, motion dampers, also called seismic dampers, are placed in the building to absorb vibrations. One of the best examples of advanced earthquake-resistant building technology is found in Taiwan's Taipei 101 Tower, which consists of a giant golden ball hanging just below the observatory deck and which is designed to generate a reaction force that counters the vibrations caused by outside forces, whether it be an earthquake or a typhoon. One understands that calling for even some of these measures to be introduced in Pakistan, where even adhering to basic buildings codes is unlikely, is a bit of a stretch. But the point is that modern technology and the architectural wisdom of the ages are both available for those who want to avail themselves of these, and possibly save a few thousand lives in the process. Or at the very least, one could hold an earthquake drill. The writer is a journalist. Published in Dawn, March 27,
2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. गुज़िश्ता मंगल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे, जिसके झटके भारत तक महसूस किए गए थे। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.5 रिकॉर्ड की गई थी और ज़लज़ले की शिद्दत 184 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से ज़लज़ले से बचा जा सका। इसके बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं, जिनमें से ज़्यादातर हलाकतें दीवारों और छतों के गिरने के नतीजे में हुई हैं। ये एक ऐसे खिते में एक करीबी मुलाकात थी जहां यूरेशियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेटों के मोड़ की वजह से ज़लज़ले एक बाकायदा और मुहलिक खुसूसियत हैं। इसके बावजूद इस्लामाबाद के ज़्यादातर रिहायशियों का कहना है कि उन्हें ज़लज़ले के दौरान इमारत को खाली करने के महफूज तरीन तरीकों का कोई हकीकी अंदाज़ा नहीं था। किसी ने उन्हें लिफ्ट से बचने के लिए नहीं कहा था और न ही किसी इमारत की इंतज़ामिया ने कभी ज़लज़ले की मश्क करने की ज़हमत उठाई थी। ज़्यादातर चीज़ों की तरह पाकिस्तानियों को सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से संभालने के लिए छोड़ दिया गया था। तस्वीर और वीडियोज़ ने जल्द ही सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। रिहायशियों ने नई तामीर शुदा इमारतों में भी टूटी हुई दीवारों और कालमों को दिखाया। अब ऐसे मामलात में किसी हद तक नुकसान नागुज़ीर है, लेकिन 2005 के ज़लज़ले की यादों और तुर्की में हालिया तबाही को देखते हुए एक बार फिर ये सवालात पूछे गए कि हमारी इमारतें ज़लज़ले के खिलाफ कितनी मुज़ाहमत करती हैं। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इमारत के नुकसान को कम से कम करने के तरीकों की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन अगर कोई ये देखे कि ज़लज़ले के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाला फ़िन तामीर कैसा हो सकता है, तो यहाँ कुछ मिसालें हैं। शुरू करने के लिए बुनियादी तसव्वुर ऐसे ढांचे तामीर करना है जो हल सकते हैं, ढक सकते हैं या मस्ख कर सकते हैं, लेकिन आसानी से मुनहदिम नहीं होंगे। एक मॉडल तलाश करने के लिए ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में रिवायती फ़िन तामीर को देखकर शुरू किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत कश्मीर से होती है, जहाँ ज़लज़ले के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली धाजी दीवारी इमारतें हिंदुस्तान में ममारों की तवज्जो का मौजू हैं। ख़ासतौर पर 2005 के ज़लज़ले के बाद, जब ये देखा गया था कि इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तामीर की जाने वाली इमारतें ज़्यादा जदीद इमारतों के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करती हैं। ये पहला मौका नहीं था जब डिज़ाइन ने अपनी काबिलियत साबित की थी। 1885 के श्रीनगर ज़लज़ले में ये इमारतें वो थीं जो बच गईं, जबकि बहुत सी दीगर ज़मीन बोस हो गई। इसका राज इस नाम में ही है। धाजी एक फ़ारसी लफ्ज़ से माखूज़ है जो कालीन बिनकरों के ज़रिए रजाई के पेच वर्क को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दीवारी का मतलब है दीवार। इनको एक साथ रखें और आपके पास एक रजाई नुमा लकड़ी का पेच वर्क फ्रेम है जो दीवारों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कंक्रीट से नहीं बल्कि मकामी मवाद से तामीर की जाती हैं, जो सख्ती फराहम करते हैं लेकिन ताकत नहीं, इमारतों को हिलने और झुकने की इजाज़त देते हैं लेकिन इमारत को एक साथ बांध कर गिरने के इम्कानात को कम करते हैं। इसी तरह का फ़िन तामीर भारतीय रियासत उत्तराखंड में भी देखा जा सकता है, जहां रिवायती फ़िरूल इसी तरह तामीर की पैरवी करते हैं, जिसमें ज़लज़ले के दबाव को तकसीम करने के लिए दीवारों में लकड़ी के बिलाक्स और लंबे चिपट पत्थर शामिल किए जाते हैं। आतिशफिशा रन ऑफ फायर से घिरा हुआ जापानी जजीरा नुमा बेशुमार मुहलिक ज़लज़लों का मुशाहिदा कर चुका है और इसका रिवायती फ़िन तामीर इस तारीख़ की अक्कासी करता है। सदियों से तबाहकुन ज़लज़लों से बच जाने वाले पगविदा को ही ले लीजिए। इस डिज़ाइन की अहम खुसूसियात शिनबाशिरा हैं, जो एक भारी मरकज़ी सतून है जो सदमे को जज़्ब करने का काम करता है और अपने डिज़ाइन में इंसानी रीढ़ की हड्डी से मिलता जुलता है, जिससे इमारत को हल्का फुल्का और हल्का सा झुकने का मौका मिलता है। इसके बाद वसी और अरीज़ भारी खिड़कियां हैं जो डंपर्स और तैरते हुए फर्श के तौर पर काम करती हैं, जो बाकी इमारत से मुनक़ते हो जाती हैं, जिससे वो पूरी इमारत को नीचे लाए बगैर ज़लज़ले की हरकत को जज़्ब कर सकते हैं। एक साथ लिया जाए तो ये पीगोडा को पूरे ढांचे को बुरी तरह मुतासिर किए बगैर ज़्यादातर ज़लज़ले की तवानाई को जज़्ब करने की इजाज़त देते हैं। इनमें से बहुत सी खुसूसियात को जदीद ज़लज़ले के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले डिज़ाइन में शामिल किया गया है, ख़ास तौर पर जापान में, और इस पर काम किया गया है जिसे ज़लज़ले की तन्हाई कहा जाता है।
इसका मतलब यह है कि इमारत को किसी किस्म के झटके जज्ब करने वाले पर रखा गया है, जो कभी कभी रबड़ के मोटे ब्लॉक होते हैं, जो फिर ज़लज़ले की हरकत को जज्ब करते हैं। इसके साथ ही मोशन डंपर्स, जिन्हें सेस्मिक डंपर्स भी कहा जाता है, को वाइब्रेशन को जज्ब करने के लिए इमारत में रखा जाता है। जदीद ज़लज़ले के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली तामीराती टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मिसाल ताइवान के ताइपे 101 टावर में पाई जाती है, जो रसदगाह के डेक के बिल्कुल नीचे लटकी हुई एक देवहैकल सुनहरी गेंद पर मुश्तमिल है और जिसे एक रद्द अमल की कुव्वत पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से पैदा होने वाले इर्तियाश का मुकाबला करती है, चाहे वो ज़लज़ला हो या तूफ़ान। हम समझते हैं कि इनमें से कुछ इक़दामात को पाकिस्तान में मुतारफ़ कराने का मुतालबा करना, जहां बुनियादी बिल्डिंग कोड्स पर अमल करने का भी इम्कान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी और ज़माने की तामीराती हिकमत दोनों उन लोगों के लिए दस्तयाब हैं जो खुद उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मुमकिना तौर पर इस अमल में चंद हज़ार जिंदगियां बचाना चाहते हैं। कम अज़ कम कोई ज़लज़ले की मश्क कर सकता है। मज़मून निगार एक सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 27 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.